So let us continue with our select command that we were discussing. The select command is used to select data from a database or from a table. The data is temporarily stored in the result set. Generally, what happens is whatever we select is temporarily saved. It is displayed to you when you turn off your database management system and restart it. Then that information that was displayed to you is not visible again. दोबारा आपको नहीं मिलती है, आपको दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ता है. हाँ, आप अपने सेलेक्टेड डेटा को अगर चाहें तो किसी टेबल के अंदर परमानेंटली सेव भी कर सकते हैं. How does the select statement work? The select statement works by using the keyword select followed by the name of the columns that or the name of the attributes जो आप select करना चाहते हैं from a given table कि आप कौन से टेबल से select करना चाहते हैं. Right. So in case अगर आपके टेबल के अंदर 10 एट्रीब्यूट्स या 10 कॉलम्स हैं और आप सभी एट्रीब्यूट्स को या कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, then rather than writing the names of the columns, you can also use the star or asterisk symbol which denotes that you want to select the data for all the attributes. अगर मैं ये वाली कमांड लिखता हूं तो it says select asterisk और स्टार विच मीन्स कि मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के लिए डेटा को सेलेक्ट करना चाहता हूं फ्रॉम अ गिवन टेबल नेम. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. अगर आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर लेट अस सपोज 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड एज. ओके, रोल नंबर, नेम एंड एज, और उसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं, देन व्हाट आई विल बी डिस्प्लेड इज वैल्यू ऑफ ऑल द 3 एट्रीब्यूट्स फॉर ऑल द 10 रिकॉर्ड्स. अगर मैं चाहता हूं कि आई शुड ओनली गेट द रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, देन आई कैन राइट सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट. तो ये मुझे क्या आउटपुट देगी? इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द रोल नंबर एट्रीब्यूट फॉर ऑल द 10 रिकॉर्ड्स. मुझे उनका नेम और एड्रेस डिस्प्ले में नहीं दिखाई देगा, आउटपुट में दिखाई नहीं देगा. सिमिलरली आप कंडीशन भी लगा सकते हैं एज टू विच रिकॉर्ड्स आर नीडेड. आपको कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए, आप इस तरह से एक कंडीशन भी लगा सकते हैं. तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट द नेम ऑफ द कॉलम्स. आप स्टार चाहें तो स्टार लगा सकते हैं, आप चाहें तो लिस्ट ऑफ कॉलम्स भी दे सकते हैं. फ्रॉम टेबल नेम, कौन से टेबल से लेना चाहते हैं, एंड देन द वेयर फॉलोड बाय द कंडीशन. So only those records will be outputted जो condition को satisfy करते हैं. For example, let me give you an example. Select star from student where age is greater than equal to 18. So this is conditional select. So what we call this we call as a conditional select. Select asterisk star means I want to select all the attributes, record for all the attributes. From which table? Student table. Where clause has been used to put up a condition. The age should be greater than equal to 18. So that means the record of all the students जिनकी age less than 18 है, वो आपको आउटपुट में दिखाई नहीं देंगे. आई होप दिस इज क्लियर. इसी तरह से आप कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स. फॉर एग्जांपल लाइक मैक्स, टॉप, काउंट एंड मैनी अदर.
which can be used along with the select command, which have predefined meaning, or it helps you to select the right data. For example, maximum is used to display the maximum value of a particular attribute. जिस तरह से marks हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक स्टूडेंट ने जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं आपके सब्जेक्ट में उसकी वैल्यू चाहिए तो आप मैक्स यूज कर सकते हैं. Count is used to find the count of the something, count of certain attributes, or how many attributes are there, or how many records are there, to be specific. Top and एक रेयर भी होता है, या उसको क्या टर्म यूज करते हैं दैट वी विल सी. टॉप का मतलब क्या है कि अगर आपके टेबल के अंदर 200 रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप सिर्फ ऊपर वाले 5 रिकॉर्ड्स ही सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन स्पेसिफाई टॉप 5. So what it will do is it will display or it will output only the first 5 records of your table. For instance, select top 3 from table name. आप टेबल नेम कोई भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय या स्टूडेंट. अगर आप ये कमांड को रन करेंगे तो व्हाट इट विल डू इज it will display only the first 3 records of that particular table. For example, select top 3 from employee information. It will display the top 3 records and will display the value for all the attributes. क्यों? क्योंकि यहाँ पर asterisk symbol लगा हुआ है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है select employee ID कॉमा एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन. कोई भी वेयर क्लॉज नहीं लगा है. इसका मतलब सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे लेकिन सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स यानी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम की ही वैल्यू डिस्प्ले होगी. देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन. यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगी है और all attributes and all records will be selected, right? So some of the keywords that can be used along with the select keyword are distinct, order by, group by, having, and into. So what is distinct? Distinct statement is used to select only the unique values from a particular attribute or a list of attributes. For example, अगर आप स्टूडेंट से स्टूडेंट से उनके फोन नंबर्स मांगते हैं एंड देन यू वांट टू प्रिपेयर अ डायरेक्टरी ऑफ हाउ मेनी फोन नंबर्स आई हैव, तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं सो दैट द डुप्लीकेट फोन नंबर्स आर नॉट डिस्प्लेड. तो हाउ टू अचीव दैट? आप जानते हैं कि आपका सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स क्या है. सेलेक्ट followed by the list of attributes that you want to select from the given table. And if you use select distinct, what it will do is it will only select those columns for the which are having the unique values. यानी उस कॉलम की सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही उठाएगा, वो उसकी डुप्लीकेट वैल्यूज को फेच नहीं करेगा. यहां पर आप देख सकते हैं इन द एग्जांपल इट सेज select distinct phone numbers from which table? Employee information table. अगर आपके रिकॉर्ड्स में ऐसा हो रहा है कि रिकॉर्ड नंबर 1 में जो फोन नंबर है सेम फोन नंबर हैज आल्सो बीन गिवन इन रिकॉर्ड नंबर 10, तो इट विल ओनली सेलेक्ट द वन फोन नंबर and it will not select the record or the phone number from the record number 5 because it is not distinct. So basically why we are using distinct? We are using distinct to remove the duplicacy in a particular attribute. Next is order by. Order by statement in the select statement is used to organize the data or sort the data in the ascending or the descending order. By default the data is always you can say ordered in the ascending. अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो देन यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन DESC, विच मीन्स कि जो आप सॉर्टिंग चाहते हैं दैट शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर.
So here is the syntax. Select the list of attributes from the given table name, order by आप कौन से एट्रीब्यूट के ऊपर सॉर्टिंग लगाना चाहते हैं, एंड वेदर यू वांट द ऑर्डरिंग टू बी असेंडिंग और डिसेंडिंग. सो लेट्स हैव एन एग्जांपल. So this is one very simple example. Select star from employee name, select star from employee information table, order by emergency contact number. तो आपके टेबल के अंदर जो ओरिजिनल डेटा पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स और टपल्स, उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो डेफिनेटली किसी ऑर्डर में नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं उनको ऑर्डर करना चाहता हूं तो आई कैन डू दैट बाय द ऑर्डरिंग. ऑर्डर बाय, मैं ऑर्डर बाय मार्क्स पर भी लगा सकता हूं कि आई वांट टू सी द मेरिट लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता हूं मार्क लिस्ट. तो उसके लिए मुझे क्या सिंटैक्स लिखना पड़ेगा उसका आप एग्जांपल देख सकते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय marks descending. What is the meaning of this? I want to select all the attributes from the student table. So I want to select the data for all the attributes from the student table, और उनकी सॉर्टिंग किस बेसिस पर करनी है, मार्क्स पे, एंड द ऑर्डरिंग शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो इट विल गिव मी द detail of the student who got the highest marks followed by the second highest and so on. So this is one way that you can achieve the order by or the sorting. In case if I do not specify anything in place of DESC, so I finish it like select star from student, order by marks, then the ordering will be in the ascending order. Group by statement. The group by statement is basically used to group the records on the basis of a particular attribute, and it can also be used with the aggregate functions. Okay, so for example, the syntax is select the name of the columns or the attributes that you want to select from a given table, group by the you can say the columns on the basis where we need to group, and then in case if you want to do the ordering also, you can specify that. For instance, what is group by? If I have a list of students who are studying in my university, so basically उनकी registration है, random registration है किसी event के लिए. Now the authority wants to know which department, how many students from a particular department have opted for the event. Then what I have to do is I have to first of all apply the group by. Group by से क्या होगा, all the entries belonging to one department will be grouped separately, and entries belonging to the second department and third department and so on will be grouped separately. Then I can apply the count, जैसा आप नीचे देख सकते हैं. Then I can apply the count to display the count also of how many students are there in a particular are from a particular department. So here you can see select count of employee ID and city from employee information group by the city. तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले तो मुझे डिस्प्ले करेगा सिटी एंड द काउंट ग्रुपिंग बाय द सिटी, एंड देन दैट इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड टू मी. तो इससे क्या होगा कि कपूरथला से कितने एम्प्लॉयज हैं वो अलग से मुझे दिखाई देंगे और उनका काउंट भी दिखाई देगा. देन जलंधर से कितने हैं उनका काउंट कितना है वो अलग से दिखाई देगा, एंड सो ऑन. तो ग्रुप बाय जो है वो सिर्फ ग्रुपिंग करता है, और काउंट जो है वो मुझे उसकी काउंट बताता है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. वेयर क्लॉज जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द हैविंग क्लॉज.
तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हैविंग क्लॉज क्या होता है। Where clause is used to put up a condition, and if the condition is satisfied or only those records that satisfy the condition are selected. Alright, तो उसी तरह से having clause can be used when we are using the group by feature. अगर हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं तो हम have अपना काम वेयर क्लॉज के साथ चला सकते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज डज नॉट वर्क विद द ग्रुप बाय। अगर आपने ग्रुपिंग की है तो ग्रुप बाय के साथ अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो दैट कंडीशन कैन ओनली बी यू अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ हैविंग कंडीशन। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं, select count of employee ID and city from employee information table। कौन से टेबल में से हम लोग डेटा को फेच कर रहे हैं? एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन टेबल में से डेटा को फेच कर रहे हैं। ग्रुप बाय सिटी and then having count employee ID greater than the 2, order by the count employee ID in the descending order. So I welcome if any student would like to explain that what will be the interpretation or what is the interpretation of this query. You can unmute yourself and you can explain what will be the output of this query. What is the interpretation of this particular query? Yes, any student would like to attempt and tell me what will be the output of this particular query. You can unmute yourself and you can answer. Okay, then I'll explain it to you. इसका मीनिंग ये है कि हमें जो पिछली क्यूरी की थी यहाँ तक तो वो सारी सेम ही है। वी वांट टू display the grouping of the employees by the city and the count। कपूरथला से कितने हैं उनकी लिस्ट चाहिए और उनका काउंट चाहिए, जलंधर से कितने हैं उनकी लिस्ट चाहिए और उनका काउंट चाहिए। लेकिन इसमें हमने हैविंग क्लॉज के थ्रू एक कंडीशन लगा दी है कि आप सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज आईडी को या उन्हीं ग्रुप्स को आउटपुट करेंगे जिनमें एम्प्लॉय काउंट शुड बी ग्रेटर देन 2। अगर मान लीजिए कपूरथला ग्रुप में 5 एम्प्लॉइज आते हैं तो वो आउटपुट का पार्ट होंगे, जलंधर में 3 आते हैं तो वो भी आउटपुट का पार्ट होंगे, लेकिन अगर लुधियाना से सिर्फ एक एम्प्लॉय है तो वो आपकी आउटपुट का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द हैविंग कंडीशन कि द एम्प्लॉय काउंट शुड बी ग्रेटर देन 2। सो all those groups or all those cities in which the count of employees is less than 3 या 1 है या 2 है, they will not be part of the output। order by there is no much to explain because order by simply क्या करेगा, उसकी एक sorting कर देगा, right। So what we have discussed so far is a lot of information that can be selected from the given tables and how we can effectively find the you can say information। There are certain complex queries also that can be applied that we will discuss in a very brief manner। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन in a brief manner I am going to discuss those। So that takes us to certain complexities or the complex queries that we can also type। So I hope this new screen is visible to everyone। तो अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड्स की हैं जो टिपिकल इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं? वी हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट अ टेबल, how to insert the data into the table, and how to select that data from the particular table। Now if I want to copy the contents
of one table into another table, can I do that? तो इसमें कॉपी करने में दो चीजें होंगी. One is to select the data that we want to copy, and the second one is to insert the data into the table where we want to copy. So select the data from the source table and then insert the data into the destination table. Right. So you are going to copy or select the data from the source table and then insert the data into the destination table. So that means copying of the data from one table to another table will consist of two queries. One is called select and one is called insert. So both of these queries will be executed in both select and insert will be executed in a single query. राइट. तो पहले कौन सी होगी और बाद में कौन सी होगी? कई बार हम लोग इसको नेस्टेड क्यूरी भी बोलते हैं, यानी एक ही क्यूरी के अंदर दो क्यूरीज, पहले एक एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद सेकंड एग्जीक्यूट होगी. So this is the statement that we are going to use to copy the content from one table into another table. So कौन से टेबल से डेटा कॉपी हो रहा है वहां से हमें डेटा को सेलेक्ट करना है. So that means in this example we are selecting the data or copying the data from the suppliers table and then inserting the same data into the customers table. This is called a nested query also because पहले ये वाली query execute होगी, that means we will select some data and then the outer query will be executed which is called the insert query. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि select query में क्या हो रहा है. Select query में से we are selecting the supplier name, city and country from the suppliers table. अगर आपके सप्लायर टेबल के अंदर 100 एंट्रीज हैं तो उन 100 रिकॉर्ड्स या 100 टपल्स का सप्लायर नेम, सिटी एंड कंट्री ऑल विल बी सेलेक्टेड एंड देन इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, यानी कस्टमर टेबल के अंदर इंसर्ट कर दी जाएगी इन द कस्टमर नेम, सिटी एंड कंट्री एट्रीब्यूट. यानी सप्लायर की सब नेम, सिटी एंड कंट्री विल बी कॉपीड टू द कस्टमर्स नेम, सिटी एंड कंट्री. तो एक चीज का ध्यान रखना है, when you copy the data from one table to another table then the data type should be same and द डेस्टिनेशन टेबल जो उसका एट्रीब्यूट है उसका साइज जो है दूसरे टेबल से कम नहीं होना चाहिए. अगर यहां पर लेट से सिटी का साइज 15 है और यहां पर सिटी का साइज 10 है तो भी चलेगा, अगर दोनों का 15 है तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर अगर सिटी का साइज 10 है तो कॉपी नहीं हो पाएगा बिकॉज द साइज इशू विल कम. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दैट द डेटा टाइप एंड द साइज शुड बी द सेम सो दैट द डेटा कैन बी कॉपीड फ्रॉम वन टेबल इनटू अनदर. Second is a special type of query where we are able to find the maximum value for some attribute. So where we are able to find the maximum value for some attribute. Right. So what is the meaning of that? Select star from student. That means from where I want to select the information. I want to select the information from the student table where now I am going to put the condition mark is equal to. अब यहां पर देख सकते हैं इक्वल टू में जो कंडीशन लगानी थी वो एक अपने आप में एक क्यूरी है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ये जो आपकी नेस्टेड क्यूरी का जो इंटरनल पार्ट है, सबसे पहले हम लोग इसको चलाकर देखते हैं या इसको इंटरप्रेट करके देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूरी.
select maximum marks from student table. What is the meaning of this command? ये कह रही है select कौन से टेबल से select करना है, स्टूडेंट टेबल से। क्या select करना है? the maximum value for the attribute marks। अगर आपके टेबल में 100 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, उसमें से द हाईएस्ट मार्क्स अ स्टूडेंट गॉट, the highest marks a student got is 99, then the output of this query will be 99. That is the maximum value for the attribute marks in a given table is 99. Now the output of this is 99 because it is giving me a maximum value for marks attribute। लेकिन क्या ये मुझे बता रहा है कि कौन से स्टूडेंट ने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं? नहीं, ये सिर्फ मेरे को एक वैल्यू बता रहा है कि 99 मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के। नाउ आई वांट टू नो कि हु गॉट दिस मैक्सिमम मार्क्स। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 99। लेकिन मुझे कैसे पता कि मैक्सिमम मार्क्स इज 99? तो उसके लिए मैंने यहां पर एक सब क्यूरी लगा दी। जब ये सब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल गिव मी द मैक्सिमम मार्क्स दैट अ स्टूडेंट हैज गॉट। तो जब ये सब क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी देन इट मे लुक लाइक दिस। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने ये वाली क्यूरी लिखी, तो इस क्यूरी में सबसे पहले ये वाली सब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। इट विल गिव मी 99। द आंसर ऑफ दिस सब क्यूरी विल बी 99 and then this query will be executed which will give me the detail of the students like name, roll number, age, everything about the student who got 99 marks, right? So hopefully this is clear to you. So rest we will continue in the next lecture. So in case if you have any questions to ask regarding the topic that we have discussed today, you can type those questions or simply type no questions in the chat window.